Hello guys. Since we are actually dealing with the pandemic that is the COVID-19 right now. And in order to deal and tackle with this pandemic, there is a need of the hour to have a vaccine to save the world population. So we will see in this video what are the different types of the vaccines present before us with the help of which we can tackle this COVID-19 pandemic. So we'll discuss this in this particular video, and stay tuned for the whole video because at the end of the video there is an animated video about what are vaccines and how do they work. So guys, we will see the novel coronavirus vaccines under trial and what are their country of origin, how do they work in this particular slide. So in that process, the first one is AD5-nCoV. It is the first novel coronavirus vaccine to enter the human trials, and it is made by the joint effort of the Chinese biotech firm CanSino and People's Liberation Army. And NCO5 is in phase second clinical trials, that is इसने first phase of clinical trials को cross कर लिया है, and it is actually about in the farthest along in research for the vaccines. And the most important thing is that ADNCO5 actually uses the harmless virus known as adenovirus to transport DNA of the spike proteins present on the surface of the novel coronavirus. That is, ये जो वैक्सीन है ये विद द हेल्प ऑफ DNA उस स्पाइक को नोवेल कोरोना वायरस के सरफेस पे प्रेजेंट है. So that is a very important vaccine and it is farthest among the human trials. And guys, the second one is ChAdOx1. It is developed by the British scientist along with the collaboration with the Serum Institute of India. तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो इंडिया है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन द रेस ऑफ सर्चिंग फॉर द कोरोना वायरस वैक्सीन, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर कंट्री एज वेल. And in the function, in the process of the function, ChAdOx1 is similar to the Chinese vaccine which we have discussed in the previous slide, AD5-nCoV. And the most important thing is that it is expected to be completed only by the May next year. So there is a time to come. So we'll have to be very much patient when the vaccine comes. It is not a thing of one day or thing. It actually takes some decade long processes. And the next one is INO4800. It is developed by the US biotech firm Inovio Pharmaceuticals. It is also in the phase 1 clinical trials and it is actually backed by the Bill and Melinda Gates Foundation. This is actually about the INO4800. So it is a new vaccine which is to be developed. It is not in the second stage of the trials. It is only in the first stage of the trials. It actually does was that with the help of the new technique of getting the body's own cells to produce the fragment of the novel coronavirus. This is done by injecting DNA into the body. इंजेक्टेड डीएनए होता है बॉडी के अंदर, वो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन्स को पहचान लेता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉग्निशन इट हेल्प्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम, जिससे वो क्या कर सकता है कि इस स्पाइक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन. द नेक्स्ट वन इज़ इनएक्टिवेटेड चाइनीज़ कैंडिडेट. इट इज़ अ कन्वेंशनल वैक्सीन. एक पारंपरिक वैक्सीन है जो कि मरे हुए या फिर डेड वर्जन ऑफ नोवल कोरोना वायरस को यूज़ करता है. इट इज़ डेवलप्ड बाय अ स्टेट रन चाइनीज फार्मा फर्म. द वैक्सीन यूजेस द इनएक्टिवेटेड नोवल कोरोना वायरस सेल्स टू इंड्यूस इम्यूनिटी. इसका मतलब ये है कि जो नोवल कोरोना वायरस है उसी के डेड सेल्स को ये यूज़ करता है और हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन बी सेव्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस इफ इट इंटर्स आवर बॉडी. This vaccine is also currently in the phase second of the clinical trials. So ADNCO5 of the जो चाइना का एक फॉर्म है और इनएक्टिवेटेड चाइनीज़ कैंडिडेट, यही हमारे पास दो सबसे आगे ऐसे वैक्सीन्स हैं which is hope to be delivered or which is hope to be made very much soon. So we will definitely wait for it, and these are very much important work in the race of the vaccine discovery. The next one is Picovac. It is developed by once again the Chinese firm company Sinovac.
It is currently in combined phase 1 and second trial. It simply means that the first ट्रायल होता है ह्यूमन के ऊपर। किसी भी वैक्सीन के अंदर जो 3 फेजेस होते हैं, द फर्स्ट वन इज द एनिमल ट्रायल, तो एनिमल ट्रायल एंड सेकेंड जो फेज होता है वो ह्यूमन ट्रायल होता है। सो दिस पर्टिकुलर वैक्सीन जो है वो ह्यूमन ट्रायल और एनिमल ट्रायल दोनों में है। सो इट इज़ कंबाइंड इन द फेज 1 एंड फेज सेकेंड ट्रायल्स। एंड the most important news about Picovac is that it is expected to be completed in around 4 months. वो next 4 months में ये कंप्लीट होके वो मार्केट में आ सकता है एंड विद जिसके हेल्प से फिर इस कोरोना वायरस को रोकथाम करने में हमें बहुत कैसे मदद मिलेगी। एंड देन देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यू टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड vaccine which is developed by the US biotech firm Moderna, which is known as mRNA-1273. It is similar in concept to a DNA vaccine such as the INO-4800. mRNA-1273 relies on the information molecules to deliver the instructions to the human body cells. इसका मतलब जो मैसेंजर RNA सेल्स हैं उसकी हेल्प से क्या करता है, ये जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में मैसेज ट्रांसफ़र करता है, जिसकी हेल्प से हमारा बॉडी इम्यून होता है विद when any coronavirus enters into our body. It is in the phase 1 trial. The next one is BNT162. It is jointly developed by the German company BioNTech and US pharma giant Pfizer BT162. It is also based on the mRNA concept like the previous vaccine. ये भी मैसेंजर RNA के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करता है और वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में एक मैसेज सेंड करने की कोशिश करता है जिससे हम इम्यून हो सके इन सभी कोरोना वायरस जब भी वो हमारे बॉडी में इंटर करता है। सो इट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट step by the German and US based collaboration private firms. It is about to be tested in combined phase 1 and phase 2 trials in Germany and to enter trials in United States as well. So Germany and United States में ये phase 1 और phase 2 trial में साथ साथ ही इंटर करेगा। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे वैक्सीन के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो पूरी तरीके से जी जान दिन रात लगा के हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। Now it's time to discuss what are the efforts of our Indian country. क्या हमारे पास जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर जो इंडियन फॉर्म्स हैं आर दे डूइंग समथिंग एंड सिंस हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था SCQ को ट्रांसफ़र किया था, SCQ को हमने ट्रांसपोर्ट किया था, तो क्या हम इंडिया भी कुछ एफर्ट कर रहा है वैक्सीन बनाने में? सो येस, इंडिया इज़ ऑल्सो डूइंग दैट एटलीस्ट 6 इंडियन फॉर्म्स आर एक्चुअली इंगेज्ड इन मेकिंग the coronavirus vaccine right now. So that is a very much important news for us, and it is also since we are a very much responsible country, so India is also giving its too much. So now the question guys is that when we will have the novel coronavirus vaccine. So experts across the world are of the opinion that at the current pace of research, about year and a half away, we are year and a half away for the complete vaccine to come in the market, and so that is something not that much very good news कि हमें अभी बहुत थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सो हमें सोशल डिस्टेंसिंग एंड इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा ताकि जब तक ये वैक्सीन हमारे पास ना आ जाए हम सेफ़ रहें इस कोरोना वायरस से। और जैसे ही ये वैक्सीन आता है तो सो वी विल यूज़ इट एंड डू इट. So and another question, since we have discussed in the start of the video that what is a vaccine and how do they work. So vaccine is a type of medicine that trains the body's immune system to fight. Vaccine are designed to prevent disease rather than treat a disease once we have caught it. We have animated video for that. Vaccines work by exploiting the immune system's memory. Vaccination simulates an infection, training the immune system and enabling it to develop weapons to fight back. This is done by introducing a germ which is dead or inactive, or just a fragment of the germ, into the body. The vaccine triggers an immune reaction without causing the illness. The organism produces lymphocytes which memorize the invader and antibodies in preparation for any future attack. The power of these antibodies and lymphocytes tends to diminish over time. So guys, I hope you liked the video. So thanks for watching. Do like, share and subscribe, and stay tuned to my channel for more better videos. Thank you.